development development of graded education search for other models. By the end of the 19th century, there were various efforts to create different schooling models and achieve greater flexibility. These efforts continued well into the 20th century, handicapped to some extent by the publishing industry's success in producing age-graded textbooks series that made it easier for teachers to manage their work. In the same period, so-called normal schools and later in the same period, so-called normal schools and later colleges produced teachers whose preparation assumed that each would work alone in a self-contained classroom and except for those in a smaller multi-graded schools with materials deemed suitable for one age group of children. Along with the search for more appropriate, flexible and child-oriented arrangements to replace the entrenched gradedness, several influential and helpful developments occurred. Progressive education was very likely the most dramatic example. Some elementary schools choose to organize classes in a pattern similar to departmentalization, with each teacher responsible for one content area, such as math or social studies. In the beginning of the 21st century, it seemed probably that a great many elementary schools continue to provide at least some space flexible to accommodate training arrangements. In simple word, development of graded education search for other models. 19th में क्या हुआ, 20th में क्या हुआ, 21st में अब आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, हर सब्जेक्ट के लिए एक स्पेशलाइज टीचर, जैसे कोई सोशल स्टडीज पढ़ाने आ रहा है तो सोशल स्टडीज पढ़ाएगा, इंग्लिश पढ़ाने आ रहा है तो इंग्लिश पढ़ाएगा, मैथ पढ़ाने आ रहा है तो मैथ, उर्दू के लिए आ रहा है तो उर्दू पढ़ाएंगे, इस्लामियात के लिए आ रहा है तो इस्लामियात। इसी तरह हर सब्जेक्ट के लिए स्पेशल टीचर असाइन करते हैं। फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आइडियल टाइम मॉडल्स ऑफ नॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल लिखना तो टाइपिंग एरर है, ये नॉर्मल नहीं फॉर्मल है। पर्पस क्या है, टाइमिंग क्या है, कंटेंट क्या है, डिलीवरी स्टेप क्या और कंट्रोल क्या है। पर्पस इज फॉर्मल, लॉन्ग टर्म है, जनरल क्रेडेंशियल बेस्ड है, और नॉन फॉर्मल क्या है, शॉर्ट टर्म है और स्पेसिफिक नॉन क्रेडेंशियल बेस्ड है। टाइमिंग लॉन्ग साइकिल है, प्रिपरेटरी है, फुली टाइम है, और नॉन फॉर्मल शॉर्ट साइकिल है, रिकरेंट है और पार्ट टाइम है। कंटेंट स्टैंडर्डाइज्ड है, इनपुट सेंटर्ड एकेडमिक है, और नॉन फॉर्मल इंडिविजुअलाइज्ड है, आउटपुट सेंट्रल प्रैक्टिकल है। एंट्री रिक्वायरमेंट डिटरमाइन clientele determine entry requirements. Delivery system institution based, isolated from environment, rigidly structured, teacher centered and resource intensive. नॉन फॉर्मल में इन्वायरमेंटल बेस्ड है, कम्युनिटी रिलेटेड है, फ्लेक्सिबल, लर्नर सेंटर्ड एंड सोर्स सेविंग है। डिलीवरी सिस्टम क्या है, फॉर्मल में टीचर सेंटर्ड है और नॉन फॉर्मल में वो लर्नर सेंटर्ड है यानी स्टूडेंट सेंटर्ड है। कंट्रोल में एक्सटर्नल हिरारिकल कंट्रोल होता है फॉर्मल में, और नॉन फॉर्मल में सेल्फ गवर्निंग डेमोक्रेटिक। प्रॉब्लम्स इन द प्रमोशन ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। A major problem in the promotion of non-formal education is its lack of recognition in comparison with formal academic education. As a result, the importance of non-formal education is not fully recognized and the opportunities to use it are not fully realized. The financial means required for non-formal education are not sufficiently allocated given the increasing demands placed on finite resources and time. While formal education can be quantified and described, this is more difficult in the case of non-formal education, which largely escapes structure and is difficult to assess quantitatively and qualitatively. Hence, funding is a problem. National education planners should reconsider their policy and practice in order to promote non-formal education as a means of increasing skills and knowledge.
इन सिंपल वर्ड के नॉन फॉर्मल एजुकेशन इतनी ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं है, जिसकी वजह से जो फंडिंग है वो नहीं हो पाती। तो हमें ज़रूरत है नेशनल लेवल पे कि इसे रिकॉग्नाइज करें, कंसीडर करें और इसकी पॉलिसी और प्रैक्टिस बनाएं ताकि इसको प्रमोट करें, जिससे आपकी स्किल्स और नॉलेज इंक्रीज हो नॉन फॉर्मल एजुकेशन की। Another important problem for the development of non-formal education is the shortage of information and statistics. Information की shortage या statistics की shortage या the conclusion was that formal education system had adopted too slowly to the socio-economic changes around them and that they were held back not only by their own conservatism but also by the inertia of societies themselves. So it is very important to acknowledge non-formal education as an essential part of the educational process and recognize the contribution that can be made by non-formal educational organization. Distance education or distance learning is the education of students who may not always be physically present at a school. इसकी सिंपल एग्जांपल आपके पास जो अभी हमारे पास अवेलेबल है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, हम फिजिकल नहीं ले रहे, वर्चुअल स्टडी कर रहे हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी इसकी एग्जांपल्स हैं। मजीद आपको मैं एक मिनट से 2 मिनट देता हूँ, आप इस स्लाइड को रीड करें फिर हम आगे मूव करते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन डिलीवर क्लासेस लाइव और प्री टेप टू स्टूडेंट्स इन देयर होम, office or classroom. Distance learning is expanding and examples of it are increasingly dramatically. Fewer than 10 states were using distance learning in 1987. Technologies of distance learning. Synchronous learning है, asynchronous learning है. Although the expansion of the internet blurs the boundaries, distance education technologies are divided into two modes of delivery: synchronous learning, asynchronous learning. In synchronous learning, all participants are present at the same time. In this regard, it resembles traditional classroom teaching method despite the participant being located remotely. अभी जो हम जिस स्टाइल में पढ़ रहे हैं, जो अभी का जो कंटिन्यूस हमारा प्रोसेस है वो कौन सा है? सिंक्रोनस लर्निंग है, जिसमें ऑल पार्टिसिपेंट सेम टाइम में क्या है? एक्टिव हैं और हम एक वर्चुअली क्लासरूम के थ्रू स्टडी कर रहे हैं। It requires a timetable to be organized. Web conferencing, video conferencing, education television, instruction television are examples of synchronous technology as a direct broadcast, satellite, DBS, internet, radio, live streaming, telephone and web-based voice over internet protocol. Web conferencing software helps to facilitate meeting in distance learning courses and usually contains additional interaction tools such as text, chat, pools, and rising emotion. Another form of synchronous learning that has been entering the classroom over the last couple of years is the use of remote proxies, include those that allow 6 students to attend classes. ये all example है synchronized learning की। और जो दूसरा मेथड है एसिंक्रोनस लर्निंग, उसमें क्या होता है? उसमें सिंपल आप वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर देते हैं और सबको प्रोवाइड कर देते हैं। जब जिसके पास टाइम होता है वो अपने टाइम टेबल के मुताबिक स्टडी कर लेता है। बेनिफिट्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन. Benefit of distance education. Distance learning can expand access to education and training for both general populace and businessmen since its flexible schedule structure, etc. Developing some activities off-site. Furthermore, there is a potential for increased access to more experts in the field as the population at large becomes more involved in lifelong learning. Distance education program can act as a catalyst for institutional innovation. The improvement being made in distance education is growing in tandem with the constant technological advancement. By having the opportunity to be involved in global institutions via distance education, a diverse array of thought is presented to students through communication with their classmates. Learners become aware of the variations in interpretation and construction of meanings. Distance education has been a more cost-effective form of learning. Students can review their